2014 में पृथ्वी थिएटर के बाहर वो जूतारा रोड पे एक Yes. सिक्योरिटी वाला स्ट्रेट वॉक को मार रहा था डंडी से। मैं गाड़ी में था, मैंने गाड़ी रोका, गाड़ी से उतरा, मैं गया उसके पास, मैंने कहा आपको मारूंगा, अच्छा लगेगा ऐसे? तो उसने मुझसे कहा कि वो कुत्ता है, कुत्ते को मैं मार सकता हूँ। तो मैंने उससे डंडा छीना और मैंने कहा नहीं, वो भी सांस लेता है, आप भी सांस लेते हो, और अगर उसकी सटक गई तो आपको काटेगा, तब आपको मजा आएगा। तो कहता है वो काटेगा इसीलिए मार रहा। तो मैंने कहा काट रहा है या आप इमेजिन करके मार Defense रहे हैं? mechanism. हाँ, तो उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो हम में बोलने की जो शक्ति है, हम उसको बहुत ही टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। और Welcome back to CineWall. Today's episode is special as it was one of our most prolonged conversations with the actor, director, and producer Anshuman Jha. We dived into Anshuman's work in films as he takes us through his latest release, Lakadbaggha, its creation, captivating theories, and the essence of the story. We also dive into his work in one of the most popular web shows, Vastram, and explore the magic behind his versatile performances in other films. I hope you find this conversation insightful as it revolves around a passion for cinema, cinematic aspirations, and healthy dialogue on the current entertainment ecosystem. Hi Anshuman, welcome. Welcome to CineWall. Pretty excited to have you. Thank you so much. I'm very excited to be here. Thank you. Thank Yeah. you for having me for Lakadbaggha. Yes. Lakadbaggha just got released on Z5. I had seen it in theaters in Mumbai. I अरे had वाह। so I still remember exact thing. तो कुत्ते और लकड़बग्गा साथ में रिलीज हुआ था और उसके 2 वीक पहले ही हमने हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट चालू किया था वॉल का। हम्म। तो उस वक्त वो मीम बनाने रहते हैं या वो रहने रहते हैं। तो एक पूरा एक मीम जी। मैंने ऐसे ही बनाया था कि अब सब मूवी पे ही आ रहा है कि भेड़िया लकड़बग्गा ये। एंड मैंने ऐसे ही डाला था कि इफ यू अगर आपको ट्रेलर कट देखना हो तो लकड़बग्गा का देखना, और क्या कहते हैं बाद में मूवी कौन सी देखनी हो आप देख सकते हो। मी एंड माई फ्रेंड वॉच टू सी लकड़बग्गा इन अंधेरी बिकॉज मेरे को Right. ट्रेलर बहुत ज्यादा पसंद आया था प्रॉपर कट से। जी। इट वॉज थ्री थिंग्स, वो मैं आगे बात करूंगा ही क्यों मेरे क्या जी। क्या मेरे को एक्साइट हुआ था, बट हाँ आई वॉज जी। मैं एक वन ऑफ देम था जो मैं मूवी थिएटर में देखने गया था। मैंने रिसेंटली वापस देखी बिकॉज आज बात करनी थी आपसे, तो मेरे जी। पास फ्रेश पर्सपेक्टिव है। सो जी। या कैसा रहा है आपका रिस्पॉन्स पोस्ट थिएटर रिलीज, पोस्ट ओटीटी रिलीज? हाउ इज द लाइफ बीन विद आफ्टर लक्कड़बग्गा, रिलेटेड टू लक्कड़बग्गा? Well, it's Lakadbaggha is essentially a movie for sorry, for these guys. या It's a movie. It's a love letter that we had in mind for dogs. The response has been phenomenal क्योंकि दुनिया में कहीं भी एनिमल लवर विजिलेंटे पे फिल्म बनी ही नहीं है. If you look at vigilantes all around the world, whether it's Batman, Superman, Iron Man, these are all vigilantes for human beings. So uh, the thought was to make a film which is the voice of the voiceless. उनके लिए जो बोल नहीं सकते, क्योंकि there is a lot of atrocities, trade that happens, and the response has been phenomenal because yeah, I'm just talking numbers. There are, I think, 22.5 million stray dogs in India, and there are 33.5 million pet owners. So there is a huge community of animal lovers. So the thought behind making Lakadbaggha was A, to reach out to them and just grow the community so that the sensitivity towards our voiceless friends just increases, and the love, the genuine love that the film has got is very overwhelming. The second part of it was the action. So these are two of my biggest passions, action and animals. So this film to got me to touch both of those. या So yeah, the action has been loved a lot. There has been some critical feedback also, which has been very nice. क्योंकि अभी ये पहला part है. This is a whole universe we are creating. So there's a part 2, there's a part 3. ये मेरा Whatever. फिक्स क्वेश्चन होने वाला था, पर हाँ या हाँ. या हाँ. So आप बोलो। नहीं, तो इट्स गुड कि इतना अच्छा रिएक्शन मिला है फिल्म को, और जिन लोगों को जो चीजें कम भी लगी हैं हमने उसको नोट किया है, एंड वी आर ट्राइंग टू incorporate that as we move forward to make the second part, which goes on floor in December this year. Oh, great. I Yeah. want to know what came first to you because I saw your name as a creative producer, you plus the director. Right. What came first? Because there are three things about which I saw as a viewer. One is empathy-driven story about like Right. because it starts with like there are parts where you say you are a vegan. मैं vegan हूँ.
राइट, तो वो एक पूरा Right. एक फ्रंट कैरेक्टर, मतलब ट्रेट बोल सकता हूँ, यू वर्सेस यू का, कि आप दुनिया को देखते हो और आपको वो पसंद नहीं आता है कि क्या चल रहा है, वो वाला पार्ट। एक है विजिलेंटे Right. वाला पार्ट कि भाई Right. दुनिया को बचाने का आया है, मैं हूँ वो। Right. तीसरा एनिमल वाला। तो व्हाट केम फर्स्ट एंड हाउ डिड द स्टोरी बिल्ड, लाइक इन योर हेड और योर, कहाँ से स्टोरी जनरेट हुई आपकी टीम में? I'll tell you honestly, absolutely honestly कि ये शुरू कहाँ हुआ, और ये मुझे भी नहीं, एक इंटरव्यू के दौरान मैंने रियलाइज किया ये कि शायद द जर्म वाज देयर। 2014 में पृथ्वी थिएटर के बाहर वो जू तारा रोड पे एक यस। सिक्योरिटी वाला स्ट्रेट वॉक को मार रहा था हम्म। डंडे से। मैं गाड़ी में था, मैंने गाड़ी रोका, गाड़ी से उतरा, मैं गया उसके पास, मैंने कहा आपको मारूंगा, अच्छा लगेगा ऐसे? तो उसने मुझसे कहा कि वो कुत्ता है, कुत्ते को मैं मार सकता हूँ। तो मैंने उससे डंडा छीना और मैंने कहा नहीं, वो भी सांस लेता है, आप भी सांस लेते हो, और अगर उसकी सटक गई तो आपको काटेगा, तब आपको मजा आएगा। हम्म। तो कहता है वो काटेगा इसीलिए मार रहा। तो मैंने कहा काट रहा है या आप इमेजिन करके मार डिफेंस रहे हैं? मैकेनिज्म। हाँ, तो उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो हम में बोलने की जो शक्ति है, हम उसको बहुत ही टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं और हमें लगता है हमारा ये कुछ सुपर पावर है। क्योंकि मैं ये जेन्युइनली मानता हूँ बचपन से कि जानवर, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं जानवरों के साथ बहुत इजीली कम्युनिकेट करता हूँ। और जानवर बोल नहीं सकते, लैंग्वेज नहीं बोल सकते, बट वो फील करते हैं। सो इट्स अ वेरी इंस्टिंक्टिव ड्रिवन कम्युनिकेशन। तो मुझे बड़ा फनी लगा कि इंसानों को ये गलत फहमी क्यों है कि जस्ट बिकॉज वी कैन स्पीक वी आर द सुपीरियर स्पीसीज। या। सो आई थिंक जर्म कहीं वहां पैदा हुआ। और फिर मुझे एक बहुत ये जो ओपनिंग सीक्वेंस है ये बहुत पहले ही मेरे दिमाग में डेवलप हो गया था, जो पहले 10 मिनट है फिल्म के। यस। तो वो मैंने स्क्रिबल कर लिया। मैं लिखता नहीं हूँ, आई एम नॉट अ राइटर, बट मैं आई एम अ स्टूडेंट ऑफ सिनेमा। आई लव मूवीज, आई लव वॉचिंग मूवीज, आई लव स्टडिंग मूवीज। आई हैव बीन एन असिस्टेंट डायरेक्टर फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम। सो आई लव बीइंग ऑन अ फिल्म सेट। तो इवन दो आई एम नॉट अ प्रोफेशनल स्क्रीन प्ले राइटर, आई आइडिएट एंड आई स्टोरी बोर्ड रियली फास्ट। तो वो पहले 10 मिनट ना मैंने स्टोरी बोर्ड कर लिए थे, और मैं जिसको सुनाता था कहता था वाओ, दैट्स क्रेजी मैन, दैट्स अ क्रेजी सीन, यू शुड डू समथिंग। तो तकरीबन 2020 या 21 में मैंने आलोक आलोक शर्मा, जो राइट। इंडिया के सबसे बड़े कॉमिक बुक गीक हैं, उन्होंने स्टैन ली से लेके सबके साथ काम किया है, उनको मैंने आइडिया सुनाया कि मैं एक वेरी पॉप सॉर्ट ऑफ एक्शन फिल्म बनाना चाहता हूँ। या। सो दैट्स वेयर द कंपनी कम्स। फर्स्ट रे फिल्म्स इज आवर कंपनी, इट्स अ प्रोडक्शन कंपनी। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं शुरू से टू मेक अ वेरी niche sort of name in making high concept medium budget films. या। So हमारी प्रेपरेशन बहुत स्ट्रांग होती है। तो अगर आप हमारा फिल्मोग्राफी देखेंगे तो हमारी पहली फिल्म थी, सोशल मीडिया थ्रिलर थी, मोना डार्लिंग, which was on the evils of social media. या। That came in 2017. It's on Amazon Prime. या। इनफैक्ट कुछ दिन पहले ही मुझे एक एग्जीक्यूटिव बोल रहे थे फ्रॉम अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म कि मोना डार्लिंग वाज अहेड ऑफ इट्स टाइम। अगर वो आज आई होती इट वुड हैव बीन इवन मोर सक्सेसफुल। या। बट दैट वाज डन बाय अ न्यूयॉर्क बेस्ड राइटर डायरेक्टर शशि सुडीगला, जो नागेश कुकुनूर के एसोसिएट रह चुके हैं। या। देन वी डिड द एलजीबीटीक्यू फिल्म हम भी अकेले तुम भी अकेले, क्योंकि हमें लगता था यार ये सब एलजीबीटीक्यू फिल्म्स इतनी डार्क और ग्रिम क्यों होती हैं। Because I have friends from the community and they are like you and me. या। So why can't सेम। we make a film which is normal, you know? या। And who defines normal also? So we wanted to break stereotypes, क्योंकि इंडिया में हमेशा या तो बहुत ही कैरिकेचरिश वे से कॉमेडी कर दिया जाता था एलजीबीटीक्यू कैरेक्टर्स को, या तो बहुत ही डार्क और ब्रूडी और इंटेंस। तो हमें एक रेगुलर रोड ट्रिप हैप्पी, बहुत ही डिज्नी वाले स्पेस में फिल्म बनानी थी विद अ गुड ऑथेंटिक स्टोरी लाइन। सो हरीश व्यास, जिन्होंने मुझे उससे पहले एज एन एक्टर डायरेक्ट किया था, अंग्रेजी में कहते हैं हमें, विद संजय मिश्रा एंड पंकज या। त्रिपाठी, उनकी स्क्रिप्ट थी। सो दैट वाज इन डेवलपमेंट फॉर ओवर अ ईयर। सो वी डिड दैट, एंड देन लकड़बग्गा had been in development through COVID, and Alok just caught on the idea, and we took this germ idea of a real incident in Kolkata, जहां 2019 में ये सच में हुआ था कि बिरयानी शॉप्स में कोलकाता में कंपटीशन चलता है, लाइक 30 रुपए प्लेट, 20 रुपए प्लेट, 10 रुपए प्लेट। एंड इट्स इम्पॉसिबल, राइट? 10 रुपए प्लेट बिरयानी आज के डेट में कैसे मिल सकता है यार? हम्म। सो देयर वाज दिस ह्यूज न्यूज रिपोर्ट की देयर वाज डॉग मीट फाउंड इन biryani that was being sold.
and street dogs were missing. So that was the real incident germ idea we took, जो कि आप फिल्म में देखते हैं, Yes. शंकु जो कि एक स्ट्रे है जो अर्जुन का Yes. Yes. दोस्त है, who goes missing. So that was the trigger point of the story, and then Alok developed the entire graph, the characters, and the opening scene was as is. Hmm. And yeah, that's how the journey started for Lakadbaggha. And then I was very clear कि हम ऐसा action करें जो असली लगे, which is the gift of coming from a place of education, because I've learned everything by doing it, not so मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है. इनफैक्ट मैं सबसे ज्यादा खुश होता हूँ जब मैं काम करता हूँ. सो एवरीबडी सेज यू वर्क हार्ड, लेकिन मुझे लगता है कि दैट इज द बेस दैट एनीबडी शुड डू. Yeah. Yeah. So, and it's a very blessed space, and I thank Gods ki I am in a place where I can choose the script I want to do. I can develop it, make it with the people I want. Kyunki, and that I have created this ecosystem at First Ray Films where young minds can come and just, make the movies we believe in and in the right way. So we were very clear कि हमें एक बहुत ही raw Korean sort of hand-to-hand combat film करनी है. I'm a huge fan of Bruce Lee, and I wanted to do everything by myself. तो फिर प्रोसेस शुरू हुआ कि दुनिया में क्राव मगा का नंबर 1 यू नो इंसान कौन है जो उसको प्रैक्टिस करता है. एंड देन वी फाउंड साही समेश, जिन्होंने अवेंजर्स की कास्ट को ट्रेन किया है. सो देन आई रोट टू साही, एंड ही again loves animals, and he came on board. Then Kecha Kam Fakdi, I'm a huge fan of Ong Bak. So I wrote to Yes. Kecha Kam Fakdi saying, this is the film, this is the story, we want this kind of action. So he got very excited कि there is an actor who's willing to train. So he had seen my work. तो उन्होंने बोला कि अंशुमन, यूजुअली मैं एक्शन स्टार्स को ट्रेन करता हूँ, ये मेरी लाइफ में पहली बार होगा कि मैं एक एक्टर को जो कि फ्रॉम अ क्राफ्ट पॉइंट ऑफ व्यू इज गेटिंग प्रिपेयर्ड to do action in reality, because film में body double वगैरह कुछ नहीं था. So it was a great experience to really go through the process, learn everything, and which is why it looks so raw, because इस film में सबने अपना action खुद किया है. Yeah, that was visible, and मैंने ये शायद कहीं मतलब सुना भी था थ्रू अ क्लिप, रील या शॉर्ट्स में कि आप यही चीज़ कोई और इंटरव्यू में कह रहे हो. वन थिंग कमेंडेबल इज, जिससे मेरा मतलब माय एक पोस्ट एक्सपीरियंस तो नहीं, आप फिल्म देख के बाहर आ रहे हो, या मैं कल रात को भी मॉम के साथ फिल्म देख रहा था, कि वो एक चीज़ है कि दिस सच टॉपिक्स, आपने पूरे टॉपिक्स बताए ना, LGBT की आपने कवर किया पुरानी फिल्म में, और जो भी आपने एक एक टॉपिक बताए, सच फिल्म्स आर मेड ऑन अ, एंड माय व्यू ऑन दिस कि वो क्यों नहीं मतलब कम्युनिकेट करते ऑडियंस से, बिकॉज वो मोरल पुलिसिंग बहुत होता है. एंड मेरा ऐसा मानना है कि आप मुझे चिल्ला चिल्ला के सिखाओ मत कि ऐसा करना चाहिए, आप बताओ क्या होता है, एंड लेट माय आई बी द जज इफ आई द राइट वर्ड, एंड दिस मूवी डज दैट एग्जैक्टली. जो So हम to be honest, that is, see, I am an audience first. मुझे फिल्में देखना बहुत पसंद है. देखिए यार, मैं इलाहाबाद में पैदा हुआ था. मैंने पहली फिल्म देखी थिएटर में, जो जीता वही सिकंदर. So and I love that film. I like movies that don't kill the intelligence of the audience. Yeah. क्योंकि I trust my audience to be very intelligent. I believe that I think honesty, emotion and honesty is the most important aspect in a story, where if you hook that, then you can tell any narrative. So मुझे किसी ने मोना डार्लिंग देख के कहा, मैं नाम नहीं लूंगा, कि ये बहुत इंटेलिजेंट है फिल्म इंडियन ऑडियंसेस के लिए. मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर वो थोड़ा नॉन लीनियर था, बैक एंड फोर्थ जा रहा था, बहुत स्पून फीडिंग नहीं था. अगर आप वो फिल्म अमेजोन पे देखेंगे, मैंने कहा नहीं, जब तक हम परोसेंगे नहीं भिन्न भिन्न प्रकार के पकवान, तब तक हमें पता कैसे चलेगा व्हाट ऑल कैन द ऑडियंस कंज्यूम. उनका पोटेंशियल ही चेक नहीं होगा. हाँ, अभी आप अज्यूम कर रहे हैं कि उनको यही चाहिए, इसलिए क्योंकि आप सिर्फ वही बना सकते हो और आपको इजी लगता है वो करना. तो हमारा थॉट था कि यार, मुझे ना कंफर्ट से थोड़ी तकलीफ है जिंदगी में. मुझे लगता है लाइफ इज नॉट, एंड दिस इज अ लाइफ फिलोसफी आई फॉलो, आई डोंट थिंक life is meant to be comfortable. I think struggle is good. I think comfort is the enemy. So when we make films, we try to really push ourselves mentally and physically, which is why we pick, like when I played a gay character in
हम भी अकेले, I wanted to be very responsible कि I shouldn't in any way look irresponsible to the community because I'm not from the community, right? So the preparation was to make sure that I should not take a single step which is in any way mocking or, quote unquote, desensitizing in any way. Just I wanted to be responsible. So Yeah. that is the one thing we really value, which is honesty, emotion, intent, and responsibility. We try to keep these things at the core of any story we tell. And that's what happens. It's like I मेरा ऐसा मानना है कि I don't rate any film a bad film. I just put it in a way. जो our product's principle is also that let people understand in their own way. हम कोई नहीं है good bad वाले. देखिए, there are इवन लग रहा है, हमेशा बोलता हूँ, अभी लकड़बग्गा हैज बीन सिलेक्टेड एट स्टटगार्ट. इट्स Yeah. गोइंग टू हैव इट्स यूरोपियन प्रीमियर इन जर्मनी ऑन 20th. मैं अभी अमेरिका में हूँ, यहाँ से मैं जर्मनी जाऊंगा. तो अभी ऐसा नहीं है कि सबको फिल्म पसंद आनी चाहिए, राइट? कुछ लोग होंगे जिनको शायद थोड़ी कम पसंद आएगी, कुछ को ज्यादा पसंद आएगी. जैसे बच्चों को बहुत पसंद आ रही है फिल्म. Yeah. मतलब we had 5,000 kids watching it in January when it released in theaters, and it was crazy. They were hooting, they were, cheering for Arjun. And I realized कि because the emotion is so pure, it connects with kids a lot more. क्या होता है ना, and again this I believe कि most of us are suffering adulthood, and we need to just disengage with all this conditioning and just value what really matters. And I think Yeah. love is something that matters. Love Yeah. is a very core, so to speak, important factor in everyone's life. Yeah. So if you don't lose the ability to stay connected to that emotion in honesty, ऐसा नहीं कि घर वालों से प्यार, बाहर वालों के साथ गलत. आजकल ज्यादा क्या होता है कि हम selectively चीजें करते हैं. Yeah. We are selectively good, selectively right, selectively convenient. नहीं, I believe हमें कोशिश करना चाहिए जैसे हम बचपन में थे. हमें कंसिस्टेंट रहना चाहिए हम जो भी कर रहे हैं. इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर जो थोड़े टेढ़े लोग होते हैं वो कंसिस्टेंटली टेढ़े रहें. Oh. तो मैं कम से कम वो भी रिस्पेक्ट कर सकता हूँ कि ये बंदा या बंदी कंसिस्टेंट है, मैं उसकी इज्जत करता हूँ. Yeah. सो एंड दैट हैज टू शो इन सिनेमा. एंड इफ इट्स कंसिस्टेंट एंड ऑनेस्ट, people will engage whether they like it or not is the film's destiny, and to each his own. लेकिन जब हम पिक्चर बनाते हैं तो हम इस नियत एक शब्द है, हम इस नियत से बनाते हैं कि उसमें चोरी नहीं होनी चाहिए. वी डोंट पैकेज थिंग्स और मेक प्रोडक्ट्स विद जस्ट. The film is not a product here. Yeah. It's a form of art. I know it's commerce too, which is why we try to pick subjects which are reasonably mainstream, so to speak. But we don't. मुझे किसी ने पूछा रकड़बग्गा गई ट्रेलर लॉन्च पे that it's very out of the box. तो मैंने कहा बॉस, there is no box for me. आप जो बॉक्स बोल रहे हैं वो हमने सोचा हुआ है कि ये बॉक्स है, ये बॉक्स है. कोई बॉक्स नहीं है. जो मन में है, we can paint the way we want, we can do what we want and not be contrived and restricted. अगर सूर्य कुमार यादव सोचता that he can't go, there is a box, तो वो जो लफाड़ेदार स्कूप शॉट्स मार रहे हैं आजकल वो कभी बना ही नहीं पाते. Yeah. He is a free flowing cricketer, so he made that shot. Yeah. तो I don't believe in this. हाँ, मेरा इसमें एज अ प्रोड्यूसर आपके लिए एक सवाल, मतलब जी. when we make, you said we make movies are not a product, पर एक कॉमर्स का एंगल होता है, आर्ट और कॉमर्स का, जहाँ पे हम Of course. people like us thrive. More from your background, we are just starting into it, right? And but when you see something and वो commercially it doesn't achieve the bare minimum that you wanted to do, so how मैं तो यही जानना चाहता हूँ कि how do you plan it out? कि मुझे आपने See, बोला आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स लेते हो और फिर आप उस पर बिल्ड करते हो, पर फिर भी एक नहीं, पॉइंट आता होगा ना कि मुझे ये अचीव करना पड़ेगा एज अ प्रोड्यूसर. नहीं, ट्रेंडिंग टॉपिक्स हम नहीं लेते हैं. हम लेते हैं मतलब वो टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, माय बैड वर्ड, जिसमें हम बिलीव करते हैं हाँ. और जो हम चाहते हैं पहुंचे लोगों तक. या We have a very simple rule. जैसे we produce first ray films now as a company. We are specializing in, like I said, high concept films. We work as per ballparks. So because of my experience, अब 20 साल हो गए हैं यार. I started assisting when I was 16. So
and I have learned everything from scratch. And like I said, I love being on a film set. मुझे अभी तुम चाय पिलाने को बोलोगे सेट पे, मैं वो भी करूंगा. So I have no ego. I have no, मेरा बड़ा simple agenda है, and that's the environment we make while working. कि इस फिल्म को इतने अंडे मिलेंगे, क्योंकि इन अ वर्स्ट केस सिनारियो इतने अंडे रिकवर हो सकते हैं. अब Okay. आप डिसाइड करो कि कौन सा अंडा कहाँ डालना है. हाँ. आज आपको एक अंडा खाना है, कल आपको 2 अंडे खाने हैं, आपके ऊपर है. सो व्हाट वी डू इज वी प्रेप रियली हार्ड. हाँ. And when we even approach people, we approach them with the script first. Ki see if you are excited by the script. After you're excited by the script, do we start any commercial conversation? Because it is very important for me to have a film set. और ये हर फिल्म के साथ बेहतर होता जा रहा है, क्योंकि आप समझ सकते हैं how difficult it is to practice it in an industry where there is so much commercial at stake, right? Yeah. So what we do is we first go on the instinct of the person. Is he, और ये मुझे समझ में आ जाता है after the first read and after the first meet कि कौन कितने पानी में है honestly, और कौन कितना pretend कर रहा है. और उसके बाद हम उनको बोलते हैं कि इस चीज के लिए हमारे पास इतने ही अंडे हैं. अब अगर आपको ये पसंद है और इतने अंडे वर्क करते हैं, तो आप हमारे साथ खाना खाइए, वरना रिस्पेक्टफुली कोई बात नहीं, we'll work again next time. Yeah. So what we do is we don't, as a company, negotiate. We set ballparks and we work backwards from the ballparks and we see who's the best person. और हम हर डिपार्टमेंट हर चीज के लिए 3 ऑप्शंस ले लेते हैं कि ऑप्शन first preference, second preference, third preference, and it has always worked out. Yeah, in fact, we have only worked with our first preferences till now. There hasn't been a film where we've had to compromise on anything. जो हमें चाहिए था, like लकड़बग्गा में, I wanted Simo Francois to score. मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनके म्यूजिक का, बट सबने मुझसे बोला कि वेरी एक्सपेंसिव, ही विल नॉट कम, बट ही केम एंड ही स्कोर्ड. एंड द म्यूजिक आई थिंक इज very unique to the film. A lot of people say it's less, but मैं बहुत बड़ा फैन हूँ कोरियन फिल्म्स का, like A Night in Paradise, Headshot, ओंग बाक मैंने बोला ही है. ये सारी फिल्मों को अगर आप देखेंगे तो एकदम भरा हुआ बैकग्राउंड नहीं होता है. इट्स वेरी एप्ट होता है. that was my feedback. Like मेरा एक्सपीरियंस वही था. करेक्ट. तो हम भरते नहीं है, तो वो क्या होता है, हाँ ऑडियंस, इंडियन ऑडियंसेस को, कुछ लोगों को लगेगा कि यार बैकग्राउंड कम है. इनफैक्ट कुछ रिव्यूअर्स ने भी कहा, मुझे यूट्यूब पे कुछ लोगों ने रिव्यूज दिखाए कि बैकग्राउंड थोड़ा कम लगा. लेकिन वो जानबूझ के है, जिससे आप धीरे धीरे कंडीशन हो जाएं कि. और बहुत फनी चीज है, जब हम लोग यूरोपियन सिनेमा या वेस्टर्न सिनेमा या ईस्ट एशियन सिनेमा देखते हैं, तो हमें वो बहुत अच्छा लगता है. लेकिन अगर हम वही चीज अपनी फिल्मों में ट्राई करने की कोशिश करते हैं, तो क्योंकि हमारा कंडीशनिंग इतना स्ट्रांग है एक्शन फिल्म्स को लेके, कि हम कहते हैं नहीं. और उसको तोड़ने का एक ही तरीका है कि हम बार बार अच्छा प्रोडक्ट लाएं जिसमें कम हो, तो फिर दिमाग रिकंडीशन हो जाएगा सब कुछ एक्सेप्ट करने के लिए. तो दैट्स द अटेम्प्ट एंड दैट्स व्हाट वी डिड विद लकड़. बहुत फैसिनेटिंग टेक है आपका, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज आई हैव बीन इन डिस्कशन विद कंप्लीट north side of the discussion that we are having with complete different takes, and I like to have followed. I'll tell you, I have followed a simple rule: films never fail. Okay. Yeah. Budget fail. +1, like different words, but very similar thoughts I have had with my team. Budget fail. So the thing is, I am from theater. I have produced plays also. It's a very, just the model and the scale is different, right? Yeah. You can't make a film without knowing everything. So it's taken me 20 years and I'm still learning because the market is changing. Now, for example, just a very small example. When we made Mona Darling, we had India sale and international sale separate, because us time Hotstar tha, so Hotstar took India, Amazon took international. Now it's changed. Now everybody takes worldwide. So the industry itself is evolving. All market scenarios are changing. The whole environment is changing. So you have to firstly know the industry to then acclimatize to the environment. मुझे ऐसा लगता है, and I may be wrong, कि बहुत लोग फिल्में बनाते हैं without really learning about how to
A, make it, B, release it. Making a film is easy. जो बहुत अच्छा प्रोड्यूसर होगा वो बहुत अच्छी फिल्म 5 रुपए में बनाएगा. जो एवरेज प्रोड्यूसर होगा वो सेम फिल्म 10 रुपए में बनाएगा. जो बुरा प्रोड्यूसर होगा वो 15 रुपए में बनाएगा. अगर कोई पैसा खाने वाला प्रोड्यूसर होगा तो वो 20 रुपए में बनाएगा. तो पॉइंट है कि वही फिल्म 5 रुपए में भी बन सकती है उस बेस्ट क्वालिटी की. एक्चुअली इनफैक्ट वो 20 रुपए वाले से ज्यादा अच्छी क्वालिटी की बनेगी, क्योंकि एस्थेटिक जो है फिल्म का वो एक ऐसी जगह से आएगा जहां आपने सीखा है सब, रादर देन तुक्का मारना. तो आई थिंक हमारे यहाँ जो ये सेट फॉर्मेट्स है ना कि ये होना ही चाहिए. आई गिव यू एन एग्जांपल. हमारे सेट पे वी वर्क विद अ 40 to 50% क्रू एंड इट वर्क्स लाइक मैजिक. मतलब इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि व्हाई डू वी नीड 100% क्रू. एक तो इतनी एनर्जी होती है, सब कुछ स्लो हो जाता है. अगर आप स्पेशलिस्ट को लो जिनको अपना काम आता है, और अगर प्लान सही करो, तो आप 50 दिन की फिल्म 25 दिन में बनाओगे. 100 लोगों की जगह 50 लोगों के साथ काम करोगे, क्योंकि सबको काम आता है और आपने उनको उतने ही पैसे दिए टेक्निकली, राइट? क्योंकि आप अच्छे लोगों को ला रहे हो 25 दिन के लिए, एज अपोज टू एवरेज पीपल फॉर 50 days. So the cost variable comes to equal. So Yeah. the point is that you need to know and Yeah. you need to study. That's why before I even got into producing, I took 6 months off Okay. and I just studied the marketing models of films which had worked. So my first film, Love, Sex or Dhoka, that worked, right? A 2 Yeah. crore film doing 20 plus crores, that's a blockbuster. Or Udan, which did really well. और राजन डीके की फिल्म आई थी एक और जो बालाजी ने प्रोड्यूस की थी, आई फॉरगेट द नेम. उसी दौरान 2011 मुझे वो फिल्में बहुत इंटरेस्टिंग. यूटीवी की फिल्म आई थी कायपोछे. Yes. तो इट्स नॉट अबाउट how you make the film, it's how you place it, how you release it, and the hygiene you maintain through the process. And then यार कुछ लोग होंगे जो आपके साथ काम नहीं कर सकते, and that is okay. Yeah. No disrespect either ways. Yeah. You have to respect their thought and they have to respect your thought. And the Yeah. thing is, we are working here. अभी चल रहा है. And see, I'm very passionate. I'm a very emotional person. I'm extremely passionate about cinema. So for me, it's not work. Yeah. I put my heart and soul in it. And I will die one day. These films will stay. So the thought is कि कोई 100 साल बाद ये फिल्म देखे तो उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए अरे काम चोरी की है. You know, that's the thought we make movies with. That we should be proud of it. It's not about big or small. We should know we have put our best foot. मेरी मम्मी बोलती थी एक चीज जो मैं बहुत गांठ बांध के रखता हूँ. काम और अच्छा काम बहुत फर्क होता है. तो हमें सिर्फ काम नहीं करना है, हमें अच्छा काम करना है. एंड दैट्स द एजेंडा वी वर्क विथ व्हाट वी हैव. Yeah. My take on films are, मतलब जो आप हमारा पॉइंट था films are always good वाला point. My take was, I have also come from a theater background. I worked on more on a backstage and writing part. Was that Right. whenever I see a theater play or a film, I see it, being a very empathetic person, I see it as a vision of the director, a vision of the Sure. filmmaker. Sure. And my point is, it will connect to people who connect. It will be watched by people and celebrated by people who connect with the vision. जिनका कनेक्ट नहीं Sure. होगा उनका वो ओपिनियन ट्रिगर हो जाएगा कि ये अच्छा नहीं लगा, ये ट्रिगर अच्छा नहीं हुआ, वो ट्रिगर अच्छा नहीं हुआ. It could be music, Correct. story, acting, some Could be. certain. Or in current times, triggers are into thousands. Anything can trigger anyone, and we genuinely don't know किस रिव्यू पे क्या पढ़ना है, क्या कर रहे हैं लोग. So my point was always that वो फिल्म मेकर का विजन है. For any film that I've ever seen, वो मेरे को अगर मुझे विजन कनेक्ट हो गया तो I celebrate it because I see it as an escapism. कि भाई he Right. took me into a world, immersive world, जहाँ पे I connect with vision, वो क्या कहना चाहता है. And वहाँ पे Right. the reason जो moral policing का मैंने पहले भी बोला, responsibility वाला, कि वहाँ पे अगर जी. वो if the audience they don't make me feel like I don't know things or I have to learn things, it's a bang on. जी. हाँ, you did it very well. Yeah, जी. मेरे को एक सीन भी डिस्कस करना है फ्रॉम जी. लकड़बग्गा, which जी. I thought one of the best, बहुत मैं डिस्कस तो बहुत कर सकता हूँ, was when you go to feed the hyena, the Lakadbaggha Right. property, and you do a Right. hair thing, because I didn't understand when I
मतलब आई डोंट नो इफ द टर्म्स आर राइट ऑन एनिमल योगा और अंडरस्टैंडिंग द एनिमल साइकिक, एक फॉर्म भी होता है उसका, टू डिस्कस विद हम्म। देम। मुझे उसके बारे में जानना है, ऑन द हम्म। प्रिपरेशन प्लस व्हाट वाज द सबटेक्स्ट बिहाइंड इट इन वन, हम्म। हम्म। कि क्या चल रहा था। यार मुझे ऐसा लगता है, मैं जब 5 साल का था ना, तो मैं इलाहाबाद में पैदा हुआ था, और हमारे घर में एक दिन मम्मी आई, गाड़ी रुकी गेट पे और एकदम फ्रीज हो गई। हम्म। और मुझे याद है, मैं 5 साल का था, मुझे ये मेमोरी याद है। और मुझे समझ में नहीं आया कि वो इतनी डरी हुई क्यों थी। और सडनली ना मेरे पाँव पे मुझे एक ठंडी सी फीलिंग लगी, और मैंने नीचे देखा, और हमारे घर में एक फुल ग्रोन किंग कोबरा था। वो मेरे पाँव के ऊपर से ऐसे गया, और मैंने उसको देखा ऐसे जाते हुए। ठीक है। अब क्या है, सब डर रहे हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ये तो कुछ कर ही नहीं रहा। तो मैं भागा उसके पीछे, क्योंकि मेरा एक 5 साल के बच्चे का दिमाग था कि ये रहता कहाँ है। अब तो दोस्ती हो गई ना, मेरे ऊपर से गया, हाँ, कुछ करेगा नहीं। कुछ किया तो नहीं। मैं भागा, और मेरी मम्मी मेरे पीछे भागी कि ये क्या है। थैंक गॉड उसने कुछ किया नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है जानवरों के प्रति ना, ये हमारा डर कंडीशनड है दिमाग में। एंड आई पर्सनली बिलीव दैट यू कैन कम्युनिकेट टू एनी एनिमल इफ योर इंटेंट इज राइट। Now the thing is, it can be bad luck that you come across a savage animal when he or she is hungry. या Because when they're hungry, they are base. They don't have intelligence like us, right? They work on impulse. या Actually, I should not say that, क्योंकि आजकल ज्यादातर human beings भी also सिर्फ impulsively काम करते हैं, या intelligent बहुत कम करते हैं। इसीलिए इतनी तकलीफ है दुनिया में। लेकिन एनिमल्स के साथ मुझे ऐसा लगता है, अगर दे सेंस यू, जैसे वो फेयर सेंस करते हैं। अगर आपने देखा होगा, कुछ लोग हैं जो कुत्तों से बहुत डरते हैं, एंड डॉग्स विल लाइक टू गो टू दोज पीपल, क्योंकि दे कैन सेंस कि ये बंदा या बंदी डर रहा है या डर रही है। तो अगर आपका अपना अंदर का मामला बैलेंस में है ना, तो जानवर से कम्युनिकेशन करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैं आपको कुछ चीजें बोलूंगा, बहुत आपको वियर्ड लगेंगी। मैं 3 दिन पहले डेनवर पे था, और ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है। और मैं डेनवर जू में गया, और वहां एक हाइना था, मैंने फोटो भी डाली थी स्टोरी पे। वो हाइना, मैं शीशे पे आया, वो मेरे पास आया, और फिर वो कुत्ते की तरह लेट गया उल्टा। और फिर वो कुत्ते की तरह बिहेव कर रहा है, और फिर सडनली बहुत लोग आ गए मेरे चारों तरफ, और मुझे लिटरली लग रहा था कि वो मुझसे बात कर रहा है। एंड यू नो, ऐसे मोमेंट्स होते हैं लाइफ में जहां आपको लगता है कि ये होना ही था। तो मैं डेनवर सिर्फ, आई वॉज ऑन अ स्टॉप वे, यू नो, कि मैं 2 फ्लाइट्स के बीच में था, तो मैंने कहा नहीं, मुझे जू जाना है। आई हाँ। वॉन्ट, मुझे जू का बहुत शौक है। तो मैं जू चला गया एयरपोर्ट से निकल के। एंड दिस मोमेंट हैपेंड, और मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि इट वॉज मेंट टू बी। मुझे पता भी नहीं था कि वहां पे लकड़बग्गा है। So I really feel animals communicate, and we got the same element into the film, that if the hyena doesn't feel fear in Arjun, जो हाइना का इंट्रोडक्शन सीन है, यस। वहां वो बंदा डंडे से मारने जा रहा है उसको, वो जो टेजर है उसके पास, एंड अर्जुन स्टिक को किक कर देता है, राइट। तो हाइना ने नोटिस किया कि इस बंदे ने मुझे दूसरे फेलियर। आदमी से बचाया। यस। सो अब हाइना को पता है कि ये मुझे बचा रहा है, ये मेरा वेलबींग चाहता है। उसके बाद अर्जुन उसके सामने खड़ा हुआ, और उसके लेवल पे आया। सो हम्म। जानवरों के साथ गेम स्टेटस का होता है, लेवल का। या तो आपको किसी भी जानवर को ट्रेन करने के लिए पहले अपना लेवल एक जी। पैसा नीचे करना पड़ता है, इट्स साइकोलॉजी। एंड देन वंस द एनिमल ट्रस्ट यू, देन यू हैव टू टेक द रोल ऑफ द ट्रेनर, so to या say. So once that relationship gets established is when you can then use food or use whatever as a, or love as a medium. And of course you can't go and, मैं ये नहीं बोल रहा कि हमें शेर को जाके या हाइना को जाके पेट करना कॉमन चाहिए। सेंस। या इंटेलिजेंस लेकिन अगर हमको दी है तो यूज करनी है। मैं वही कह रहा हूँ कि पॉसिबल है, अगर आप साफ हो और आपका थॉट साफ है। और जैसे इंसानों में भी अच्छे इंसान होते हैं और उतने अच्छे इंसान नहीं होते हैं, जानवरों में भी कुछ जानवर होते हैं जो थोड़े अग्रेसिव होते हैं। तो यू हैव टू यूज योर इंटेलिजेंस टू सेंस, या एंड आई रियली बिलीव इन दैट। एंड दैट इज अर्जुन सुपर पावर, एंड एज द यूनिवर्स ग्रोज, that is what we are working on. I mean, he's not, he's extremely ordinary, but his superpower is that he's ordinary and he can really connect with या other living things. So that is where we were going for. ग्रेट। I want to go back, like discuss some other work also, because you आपका आपका नोन होना एक तो ज्यादातर
इन मैं मार्केटिंग के टर्म में सेक्टर वाइज देखूँ तो सबसे बड़ी चीज, वन ऑफ द सबसे बड़ी चीज काम की होगी वो मस्तराम, Right. राइट? बिकॉज फ्रॉम द metric view only, it garnered humongous amount Yeah, of yeah. views. It's It thousand. It's, if I'm not mistaken, it was 1,000 million plus views or yeah, something. It's the biggest. and Yeah. while it came to my mind recently when I was on a flight and I watched Love Stories 2, Right. and it didn't connect to me. And मेरा point, Right. मैंने बस ऐसे मैं एक लिख रहा था कि increasing amount of lust, love and everything on OTT, ऐसे ही मैं एक thought Right. piece लिख रहा था ब्लॉग में। और तब मुझे यही आया कि ये सेम, मतलब नॉट सेम चीज बट सिमिलर चीज, that Love Right. Story 1 was on built upon that, okay, uh, ह्यूमंस डिजायर कैसे बढ़ते हैं और व्हाट इज टैबू व्हाट नॉट इज टैबू, पर लव स्टोरी 1 था, और 2 दे वेंट इनटू सम अदर डिफरेंट वेरी वेरी वेग वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू मी। बट व्हेन आई थॉट जी, अबाउट इट कि रियल जो ऑडियंस किसके लिए बनाया है, द पीपल हु कुड बी समवन हु जस्ट क्रेव्स लस्ट इन सम वे, समवन जो बस वो चीज देखने आते हैं, या समवन जो बस वो जी, एक तरीके से ही मार्केट होते हैं, इनके लिए मस्त राम इसीलिए एक बहुत बड़ा हिट हुआ था। मस्त्रा में हम्म, कोई भी एक सीरीज ले लो, कोई भी टॉपिक या कॉमिक नॉवेल या एक शो देख लो, कोई और भी ओटीटी पे, जी, तो सेम जी, एंगल पे बनाओ, क्योंकि वो वापस वो एक चीज पे बहुत ज्यादा ऑनेस्ट था कि वो जो एक बुक पढ़ता है, वो लिखता है, वो जो बताता है, और फिर वो जो कनेक्शन उसका स्टोरी कनेक्शन आता है, तो वो जी, इतना ज्यादा, मतलब अहेड ऑफ टाइम बोलना तो बहुत गलत होगा, वो टाइम पे वो बराबर ही था, अभी भी वो जी। बराबर ही है, पर स्टिल राइट ना वो जो जो चीज है ये वो कनेक्ट नहीं हुई। तो मुझे ये जानना था कि आप वो कैसे हुआ, एक तो मेरा बस एक क्यूरियस सवाल है बहुत ही, और दूसरी, सो वो, हाँ, सी मैं यार मैं बहुत इंस्टिक्टिव हूँ, जैसे मैंने कहा। सो सुनील बोरा इज द प्रोड्यूसर ऑफ, and he's a very senior producer. He's made some amazing films, and I have a lot of respect and regard for the stories he picks. हम्म, And when he told me about Mastram, मुझे किरदार पसंद आता है, और मुझे राजा राम का किरदार बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि it's kind of a biopic, isn't it? Because he has या the rights to his life. Because this was a real person who existed in the 80s. So मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा कि एक बंदा जो ब्रेक्ट और शेक्सपियर पढ़ता है और नॉवल लिखना चाहता है, और नॉवल लिखा भी है, उसकी नॉवल छप नहीं रही है, और ये रियलिटी है, ये सच में या हुआ था, या क्योंकि वो मासी नहीं है, या वो बिकेगी नहीं, बोरिंग है, या क्योंकि किसी को नॉवल पढ़ना नहीं था, और फिर उसको फोर्स कर दिया, पब्लिशर फोर्स करता है दैट ही शुड राइट इरोटिका, and then he randomly imagines erotica and it starts doing really well. So for me, just these three lines na, as an actor is very exciting, to play a character who's innocently Rajaram and then has to turn it around and become surprisingly Mastram. That's या how I saw it as. And then, of course, the love story was very pure, which is also a reality from his life, that he fell in love with a girl whose father wanted him to have money. और क्योंकि पैसा चाहिए था, इसलिए उसने ये किताबें लिखना शुरू की। तो मेरे लिए कहानी बहुत गजब की थी, एंड आई वाज सोल्ड ऑन द स्टोरी। हम्म, एंड देन क्रेडिट टू Prableen Bhabhi and Mr. Bhora, who were the producers of the show, that they got the team behind Game of Thrones to do the intimacy. So it was the first Indian series that had intimacy directors ever. I mean, अब पिछले एक साल में मैं बहुत ये राउंड नॉर्मल टेबल है। वगैरह देखता हूँ, तो मैं देर इज एन बोलने ही वाला था। इंडियन इंटिमेसी कोऑर्डिनेटर, ये सब हैं। लेकिन आई वर्कड विद द टीम दैट वर्कड ऑन गेम ऑफ थ्रोन्स एंड मैजिशियंस, एंड दे आर द नंबर वन इन द वर्ल्ड. So just like action is a speciality and there is a process to do action, or dance, there is a process to have a choreographer and learn. Intimacy also needs a process and a respect and consent. There are a lot of things that go into it, which I don't think the Indian industry was attuned to यस, till Mastaram happened. In fact, Mastaram changed, क्योंकि Mastaram जब हुआ उसके बाद I got a call from this girl who's, I think, the first Indian intimacy director. She spoke to me, tried to understand how it happened, and now I'm very happy that intimacy has picked up, intimacy coordination has picked up, because I think it's good for the actors, it's good for the film crew, and it's very good for the process of making the story, because या intimacy coordinators know how to shoot and what to shoot, instead of a kiss happening and somebody saying it's looking good, let's roll. That's not how it goes.
Yeah, Amanda and Megan used to plan every frame, 10 seconds of this, 15 seconds of this. And the moment they got it, it was cut. There were so many protocols on set, from no cell phones to, uh, when the female actors used to come, uh, the camera, when we were rehearsing, the camera used to be down. And I learned so much from those two women when they came. Because they are specialists here and they were coming off a show of that size. So they are dealing with actors who we look up to, yeah, right? Who that we look up to. So मैं ये बार बार बोलता हूँ, for me it's the process. yeah, I'm not a actor who just one day decided to become an actor and started struggling auditioning. I've struggled for 20 years and I'll struggle till I live. yeah, The struggle is real and the struggle is constant. Only the levels change. But for me, what my gurus have taught me, and I think teachers are extremely important, which is why everybody should get good teachers. My teachers have taught me the importance of process. As an actor, you can't take shortcuts. You need to give it time, you need to give it energy, you need to struggle on it to understand what it is, and only then it will look real. yeah, And that is the least which we owe to our audience who's paying to watch us. If we can't be, literally busting our balls and working hard, then I mean, that's the least an actor should do, I feel. And that's why I get very disheartened when I see non-actors ruining films. Films which would be great, but because there is not enough effort put in, them becoming a little, you know, yeah. because Because one thing also is one thing that is happening now is people running behind the term ये चलेगा, जो आपने किसके बारे में भी बताया कि ये अच्छा लग रहा है, ये कंटिन्यू करो. There are, because the number of stories and content नहीं बोलना है, पर material that is coming out on different OTTs is so mammoth, so increased on a different scale. They are not, there are hardly few people focusing upon the process part or the deliberatively vision part, but the other part yeah, I is do. just focusing Yeah, upon the ये चल रहा it's है. becoming an industry. It's like a wholesale industry, you're saying. Yes, yes, Delivery और करते. and हाँ, and which is, मेरा एक 18 साल का भांजा है, he's studying filmmaking, and he said something very nice that day to me कि हमारी एक अगली फिल्म है जो आने वाली है, लॉर्ड कर्जन की हवेली, which was shot in the UK last year. Again, a very different film. It's my directorial debut. It's my first film as a director. Usme, my nephew who's 18, he saw it and he said, I see love in this film, Mama. Even though it's a black comedy thriller, he had a lot of fun. And he said there is love for cinema. And then he said, these days when I watch trailers, I miss seeing the love of the maker in the film. And which was a very insightful thing for me to hear, because a young 18-year-old is telling me that a lot of trailers that he sees these days, he doesn't feel that it's been made from a place of pure passion. yeah, And I think that is very important as cinema lovers, that we make, and at least I can speak only for myself, that we make films which are coming from a place of pure love and the want of telling the story. You know what I mean? Uh, yeah. So sorry, I नहीं digressed a नहीं, little. What? मेरा पॉइंट तो बहुत सिंपल ही था कि अभी वो चीज ऐसे ही जा रही है कि ये अच्छा लग रहा है तो जाने दो, बट देयर इज नो मेथड टू द मैडनेस टुवर्ड्स पार्ट एंड द नहीं, नहीं, यार, पॉइंट. but there will always see, there will always be people who will do good work. या And फॉर श्योर, फॉर श्योर, फॉर श्योर. see Amit sir, like I'm a huge fan of Amit sir for how he goes about his films, for how he prepares. And see, for the audience, it's all great, preparation. He lost weight, he put on weight. But understand what an actor goes through when he or she is doing that. It's a lot of fulfillment and joy, because this is, understand one thing, actors and artists face so much rejection on a daily, weekly, monthly, yearly basis, that every piece of work is very special. You understand? या So when there is somebody who respects it more than his conveniences and comforts in life, it's a lot of I'll use a commercial term, paisa vasool factor for an audience. या So look at Amir sir. He puts in his 300% in doing anything and making the process enriching for everyone involved.
which I think is a great way at that level to make movies. Yeah, तो because there has to be respect and value given to everyone's time, energy, resources, and then take it together towards this journey. There are different ways to do it, different people do it differently. Uh, but the moment you will focus on the process, the result by default will be good. yeah, Whether it's successful, how successful is inconsequential. Do you get what I'm saying? yeah, Because as यार कितनी फिल्में हैं जो 50 करोड़ करती हैं, 60 करोड़ करती हैं, कोई याद नहीं रखता। yeah, 5 साल बाद ही मैं अभी हम 2023 में है ना, आप कोविड के 2 साल निकाल दो, उसके अलावा लेट्स आप 2015 से अगर फिल्में लो, आपको कितनी फिल्में मिलेंगी दैट हैव डन वेल, बट यू yeah. विल नॉट इवन रिमेंबर देम, whereas there are so many films that were smaller but you remember them. I remember a Masan, for example. I remember I the remember photograph. I remember photograph, कड़वी हवा, कड़वी और हवा, आंखों there देखी, was another, अरे एक और संजय जी की बहुत अच्छी फिल्म आंखों थी, देखी, आंखों देखी, मैं वही बोलूँ। आंखों देखी, यस, एंड अ सक्सेसफुल फिल्म। या, देखो यार, जो the biggest thing we are struggling with, and I think we should come together to try and solve it, is हम लोग ये numbers के साथ फिल्म की सक्सेस को कंप्यूट कर देते हैं। The film doesn't just have a commercial impact. Just like a film is a mix of art and commerce, there is a commercial impact and there is a overall cultural impact या, which art should have. And I'm not being very arty or niche or, या, for me, Three Idiots was the best of both worlds. Three Idiots had a commercial impact and a cultural impact because it was dealing with something which all of us have seen growing up, right? कि बेटा पढ़ाई करो, आईआईटी में जाओ, इंजीनियरिंग बनो. You know, या, we've all seen that growing up through the 90s and 2000s, and so many of my friends have done that. I have friends जो इंजीनियरिंग छोड़ के फिर एक्टर बन गए. या, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं अमोल पराशर, वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट, अब इतने सक्सेसफुल एक्टर. तो अ, जी मुझे लगता है फिल्म का पैरामीटर सक्सेस का सिर्फ नंबर्स नहीं हो सकता है, या, क्योंकि अगर वो होता तो अंदाज अपना अपना, आप और मैं आज उसको कल्ट फिल्म नहीं बोलते ना. यस, अंदाज अपना अपना इज बियॉन्ड नंबर्स, क्योंकि इट्स अ ब्रिलियंट फिल्म यार. या, एंड अब मैं आज भी देखता हूँ तो हंस हंस के पागल हो जाता हूँ. अगेन आमिर सर, there is again a factor there because there is so much. Also Rajkumar Santoshi, I think he's a very diverse director. When you see directors body of work, जैसे मैं शुजीत सरकार का बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि just the body of work, you see a Vicky Donor, then you see a Madras Cafe, then you पीकू, see a Piku, then you see that the Sardar Udham Singh. There is no one genre, या, it's, and I think that's a sign of a an या. absolute craftsman. Yeah. आप And अपने प्रोसेस की बहुत हमने बातें की अभी, तो आपका जी, कैसा प्रोसेस रहता है इन टर्म्स दैट बिकॉज you jump from one project to other project. There's a Mastram, Hmm. you are timid. I never jump. So I am मतलब jump as I in am a struggling actor. I'm a beggar who's a chooser. हाँ I मतलब always say this. क्या जंप मतलब ऐसा नहीं जंप टू जंप बट एक प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट आते रहता है तो वो प्रोसेस मैं कैसा रहता है? टाइम एक टाइम में मैं एक ही प्रोजेक्ट करता हूँ. ओके, मैं और कुछ नहीं करता हूँ. जब मैं लकड़बग्गा कर रहा था, मैंने 1 साल सिर्फ लकड़बग्गा किया. 6 महीने मैंने ट्रेनिंग की, सिर्फ ट्रेनिंग, कोई शूटिंग नहीं की उस टाइम. I mean, people say I'm stupid that way. People say I'm not. What's the word? Uh, होता है ना एक इकोनॉमिक कमर्शियली. सस्टेनेबल, या whatever. या, नहीं, बोलते हैं कि यार तुम कैसे 6 महीने कुछ नहीं करोगे. मैंने कहा नहीं, गुजारा अभी मैं कैसे ये, करोगे वाला पार्ट. हाँ, मैंने ओके, कहा नहीं देख यार, मैं बहुत सिंपल आदमी हूँ. आई हैव वेरी लिमिटेड नीड्स, एंड आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक. तो आधे पैसे तो वहीं बच गए. क्योंकि मुझे आजकल लगता है आधे पैसे लोग उस पे चले इन्हीं जाते सब चीजों में जाते हैं. अम, मुझे ज्यादा पार्टी वार्टी का शौक नहीं है. मैं बहुत बाहर बिल्कुल नहीं, और अभी से ऐसा नहीं है, ये अब हुआ है, हैं. बचपन या से. तो मतलब किसी प्रोसेस में चीज, पार्ट क्या होता है प्रिपरेशन का कि क्या क्या चीजें आप हाँ, फैक्टर टिक करते हो? तो क्या होता है ना, जब मैं जैसे लकड़बग्गा मेरा या तो इंटरनल टू एक्सटर्नल होता है या एक्सटर्नल टू इंटरनल होता है. तो मैं पिछली 2 फिल्मों का एग्जाम्पल लेता हूँ. लकड़बग, हम भी अकेले तुम भी अकेले में, आई हैड टू क्रैक द इंटरनल एंड देन ब्रिंग इट आउट एक्सटर्नल.
Yeah. So the longest took me the research, because I spent a lot of time with people from the community. I understood the things they're dealing with on the surface and internally. Like somebody had issues with their father who's not accepting, somebody had. So while on the face of it, they were leading a normal life, at home, they had an emotional baggage. Yeah. Uh, so that process started it cracking the internal, and then moving to the external about how he will walk, how he will speak, how Veer was the character in Hum Bhi Yeah. Akele on Disney Plus Hotstar. Lakadbaggha, it was the other way, because it was a martial arts guy, and because I was not. The initial challenge was to get the body right. So Yeah. I said, let's forget the internal, let's focus on the external. So for 6 months, I was only training, getting the body part right so that it looks real. It looks, how do I, वो दिल्ली में होता है ना कुटाईबाजी, we wanted an Yeah. action film where it looks raw, Yeah. जहाँ बहुत perfect सब कुछ ना लगे. So even though I can do a perfect round kick, I needed to know how to do it, क्योंकि जब असली लड़ाई होती है तब आपको वो डिस्टेंस नहीं मिलता Yeah, है कि आप. मिसफिट थोड़ा तो होता ही है, एक हाँ, एक तो आर्क आपको ऑफ थोड़ा मिसफिट बहुत. होता है. या करेक्ट. तो getting the physicality right was the beginning of the process for Lakad. So, या and the script is sacrosanct to me. So even when I was doing that, I was reading the script again and again and again and again. क्योंकि मैं कोई भी स्क्रिप्ट कम से कम 100 बार पढ़ता हूँ, कम से कम, जो मैं कर रहा हूँ. और क्योंकि मैं थिएटर से आता हूँ, क्या होता है, मुझे सबकी लाइनें याद हो जाती हैं. तो मुझे पूरी फिल्म बाय हार्ट है आई दिमाग कैन में. रिलेट. या उससे दो फायदे होते हैं. अगर किसी दिन बारिश हो गई या शूटिंग में प्रॉब्लम हो गई और बहुत प्रेशर है और आपको एक सीन 2 घंटे में खत्म करना है क्योंकि काफी टाइम वेस्ट हो गया है, आपको ऑलरेडी पता है कि आप कहाँ से आ रहे हो और आप कहाँ जा रहे हो, और आपको पूरा ग्राफ कैरेक्टर का पता है, तो फिर आप पे प्रेशर ही नहीं है, क्योंकि आप जानते हो आपका प्रोसेस एंड आपका प्रिपरेशन इतना स्ट्रांग है कि आप सेट पे जाते हो और 5 मिनट में कर दोगे सीन, अगर दूसरा एक्टर रेडी है. या और इस फिल्म में सबसे बड़ा जो प्लस था वो था कि हमने वर्कशॉप्स, और हम लोग वर्कशॉप्स करते हैं. सो फर्स्ट वे फिल्म्स पे हमारा सिर्फ नाम के वर्कशॉप्स नहीं करते हैं. देयर इज अ वेरी प्रोसेस ड्रिवन वर्कशॉप इन हाउ वी क्रैक द इंडिविजुअल, कि आप लेवल 1 पे इंसान कौन हो, और लेवल 2 पे आपका कैरेक्टर कौन है, और आपका कैरेक्टर कितना आप में आ रहा है और आप कितना कैरेक्टर में जा रहे हो. सो हमारा वर्कशॉप वैसा डिजाइंड है. सो रिद्धि डोगरा, परेश पहूजा, मैंने 2 हफ्ते लग कर वर्कशॉप किया. हमने काफी स्क्रिप्ट की चीजें, यू नो, चीथड़ेबाजी की, सवाल पूछे राइटर से, फिर राइटर आए, उन्होंने जवाब दिए, कुछ चीज़ों का जवाब वो नहीं दे पाए तो उन्होंने चेंज किया. रिद्धि की जो बैक स्टोरी है माँ बाप वाली, वो पूरी वर्कशॉप के दौरान बाहर आई. ओरिजिनल स्क्रिप्ट में कुछ और था. सो a lot of things start from there, and then the workshop process, and then the idea is कि ज़्यादा सेट पे डिस्कशन हम नहीं करते हैं, क्योंकि सबको पता है कि उनका किरदार क्या है और करना क्या है. फिर ऑफ कोर्स 19-20 इम्प्रोवाइजेशंस तो होते ही हैं डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर, बट it begins mostly inside out, but in Lakadbaggha it was outside in, for this reason that there's so much डिपेंड ऑन द action. कैरेक्टर बेसिकली. Otherwise 90% times it's inside out. I'd And like to figure out how what is the vulnerability of the character vis-a-vis the vulnerability of Anshuman. and who plays as a feedback loop for the like for actors, like who says that हाँ अब हो गया अब continue. On set or during preparation? Both. मतलब For me it's आप the अपने writer आप को and the director. रोकते कैसे हो कि अब हो गया, अब I can now, what gets you in the instinct that now I am ready for the shoot. यार ऑनेस्टली ना, मुझे हमेशा लगता है थोड़ा और कर सकते थे. वो अभी तो भी होता ह्यूमन है. इंस्टिंक्ट है. या बट यार इट्स अ वेरी इंटरनल, हाउ डू आई पुट इट, लाइक मैं आपको एक आइडिया, मैं एक म्यूजिकल शो करता था झुमरू करके, किंगडम ऑफ ड्रीम्स पे. ओके, वो किशोर कुमार के ऊपर बहुत बड़ा म्यूजिकल था, 100 डांसर, और बहुत, इट वाज अ लैविश, इट वाज इंडियाज फर्स्ट ग्रैंड ब्रॉडवे काइंड ऑफ. और मैं वीकेंड्स में मैं सिर्फ सैटरडे संडे शोज करता था. सो आई यूज्ड टू फ्लाई ऑन फ्राइडे, एंड मैंने 50 शोज किए उस प्ले के. और बहुत लंबा प्ले था, 2 घंटे 50, नियरली 3 आवर्स लॉन्ग, राइट. तो उस 50 शो में सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ जब मुझे, उसमें ना क्या था कि 11 गाने थे, डांस करना था, गाना गाना था, बहुत फिजिकलिटी, रोपवे में उड़ना था, एंड क्लाइमैक्स से पहले ना एक बहुत बड़ा मोनोलॉग था, विच वाज द माय फेवरेट पार्ट.
लेकिन वो 2 घंटे 15 मिनट बाद आता है नाटक में, और तब तक आप ये सब कर चुके हो। मेरा 1 किलो वजन घटता था हर शो में, 800 grams to 1 kg आई यूज टू लूज। बट माई एम वॉज कि ऑन वन डे आई वॉन्ट टू नेल दैट मोनोलॉग व्हेन आई नो आई हैव नेल्ड इट, यू नो। Yeah. एंड 50 में सिर्फ 2 बार हुआ। Wow. सबको हर शो में मजा आया, किसी को पता नहीं चला होगा। हाँ, लेकिन that is. मुझे, क्योंकि उन 2 शो में ना, मैं ऑडियंस 1200 लोग, फुल हाउस होता था। 12, मैं पियानो की तरह, मैं कुछ भी कर, आई कुड फील दैट एज एन एक्टर, आई Yeah. कुड फील द एनर्जी। सो फॉर मी, इन द फिल्म preparation also, there comes a point where I hit, and it can happen not necessarily while I'm reading the script. ऐसा हो सकता है कि मैंने 6 महीने पढ़ लिया हो, फिर सडनली मैं एक दिन स्किपिंग कर रहा हूँ या साइकिल चला रहा हूँ, और सडनली मुझे एक यूरोका मोमेंट आता है कि अब ये रेडी है, लेट्स गो। Yeah. सो, and it really helps when you have a timeline. So again, as a production company, we put flag posts to timelines as well, कि हमें ये, हमने जैसे अप्रैल में डिसाइड किया कि हम लकड़बग्गा नवंबर से जनवरी शूट करेंगे। अप्रैल 2021 में डिसाइड किया कि नवंबर, दिसंबर एंड जैन 22 वील शूट, फिनिश द शूट। सो आई न्यू कि इतना समय है मेरे पास प्रिपेयर करने के लिए। Hmm. So then that kind of gives you a focused energy also, कि now you can invest all your time into this to delivering that. Yeah. I am like मुझे मेरे थिएटर डेज या मतलब whatever actor friends I have who are in theater, Hmm. उनका याद आ रहा है कि हाँ, how we used to practice play or how I like the, because backstories of every film for every actor, every creator fascinates me a lot. That's the reason I am doing what I'm doing. I enjoy this thoroughly. But one day I want to make a film. One day I want to be that part. One day I want my like the vision of. I have a thing that I want to make people feel something, the emotion through Right, story, थ्रू right. विजुअल स्टोरी टेलिंग वगैरह, तो वो I चीज, wish you the best, man. या तो वो I उसके hope. लिए जाना रहता है। So yeah, I'll just to go to my last segment, another recommendations, and जी, just fun, sure. rapid fire नहीं कहना है, पर हाँ rapid fire ही हो जाएगा। I want to know last films you watched, The last films I watched, the last film that you watched, feature film, right? anything. I And saw, yeah, I'm in America right now. On the flight, I saw Anna, okay, क्योंकि I have heard a lot about Anna's action, and I wanted to see what have they done, and my mind was blown. I think it's brilliant, and I will recommend Anna to anyone who likes action films. great. Like your top 5 films for everyone, like जो आपके My top personal top 5 थे, five, yeah, number one is Ron Howard's Rush. It's my all-time favorite film. Uh, I think for me, it's the perfect film because it's clean, it's pure, it's coming from a place of two men honestly competing. yeah, So, Rush is number one. Jurassic Park is the first English film I ever saw in theater, and it made me want to be a part of movies. yeah, So, for me, Jurassic Park, the first one, 1992 or 93, whenever it came. yeah, Jurassic Park is number two. Jo Jeeta Wahi Sikandar, because it made me want to become an actor. It made me, again, the first Hindi film I saw in a theater, so has had a huge impact on me. Uh, there is Avinash Arun's debut film called Killa. It's a Marathi film. I yeah, absolutely love that film. Like मेरी उस साल एक फिल्म थी चौरंगा, जो कि मामी एंड दुबई और सब जगह किला के साथ ट्रैवल कर रही थी। और मुझे याद है मामी में चौरंगा वन द इंडिया गोल्ड बेस्ट फिल्म in 2014, and Killa won silver, and I was like, nahi yaar, that film deserves gold, because I think that was, it's just a great film, yeah. like Killa, yeah. So Avinash's film Killa, number four. And यार बहुत फिल्में हैं जो I like the whole Bruce Lee collection I can go on about, but I mean, if I have to pick one, I would go for the Ip Man series, the whole series, Yeah. Ip Man 1, 2, 3, 4. Yeah, I'm a huge fan of the action in Ip Man. Um, and if I can add one more, I love Zoya Akhtar's Zindagi Na Milegi Dobara, Okay. for the urban scape that she shows. Yeah. I think she's very unique and special in that. Yeah. She does it best, according to me. Yeah. And into TV shows? Oh yeah, yeah, I am on the web, right? Yeah. Like
digital shows. So my number कोई भी one would be Sherlock. It's my all-time favorite. The BBC series yeah with Benedict Cumberbatch. That's an all-time. Queen's Gambit is yeah a series I think in terms of pure writing is way ahead of a lot of other things. Uh, there was a really good show which I saw sometime back called Mr. Robo. I don't yeah know if you've seen. I've heard about it. Okay. It's got Rami Malek, and as an actor, I think it's just another level. It's a performance to up your jaw will drop. You'll be like, "Kya kar raha hai ye aadmi?" So Robo is one, and amongst Indian shows, Panchayat. I like simple shows. I loved Panchayat a lot. So Panchayat is number four, and amongst the urban Indian shows, I also loved Made in Heaven season one. I thought it was Again, very well Zoya. done. Yeah, Again, Zoya. yeah, Yes. yeah. And Yeah. what type of films do you like to see? Plus, what type of films do you like to create? Is there any difference? Because now you're Mostly not the too same. far. Mostly the same. Like horror films se dar lagta hai. That was the only contradiction with Mona because I never thought I'll make a horror thriller. But then it wasn't really a horror thriller. It was more like a. It was a. How would you define it? It was a borderline science fiction sort of a Yeah, film. If you see Mona Darling, it's a very contemporary sort of topic. So, but usually I love watching feel good films. So I loved watching uh, Lal Singh Chadda. I loved that film. yeah. Last year, I think it was one of my favorite Quite films. innocent. The innocence was Love it. too raw. Yeah, Top notch. Like, I don't know why people who didn't like it, but I cried a lot during that film. I laughed a lot. It was an experience. So मैं ऑडियंस की तरह फिल्म देखता हूँ और मुझे वो है वैसी फिल्में बनाने में मजा आता है. So then I loved the kind of films. I love rom-coms. So yeah, I love The Notebook. I love those quintessential yeah, classical old school romances. मुझे बहुत पसंद है. And I love action movies. yeah, So like I said, A Night in Paradise is one of my favorite films क्योंकि उस पूरी पिक्चर में एक्शन मुश्किल से 15 मिनट होगा 15 या 16 मिनट लेकिन the impact of it really hits you. yeah. So yeah, I like to watch those kind of films. Any one or any number of films like top three or two जो भी जिसने आप पे बहुत ज्यादा impact किया हो, like you it moved you certainly. Oh, Rush again, Ron Howard's Rush. I try to see it on every birthday. Actually, that's my birthday ritual. I like to watch Rush on Hmm. my birthday every year. It just reminds me what filmmaking can be. And again, a great director because it's the same man who's made A Beautiful Mind. Hmm. So the spectrum is like, yeah. So Rush would definitely be one. Mm, there was an incredible film on the life of Johnny Cash called Walk the Line in Okay. 2004 or 5. Uh, Incredible film. Like, I like Johnny Cash's music, but I got introduced to what the man was, and Jacqueline Phoenix played Johnny Cash, and he sang the songs. So again, as a performance and as a film, it really moved me. Um, and there was a film that really inspired me was the Korean film Parasite, Yeah. which won the क्योंकि मैंने पहली बार लाइफ में ऐसी फिल्म देखी जिसमें 5 जॉनर थे एक ही फिल्म में Yeah. and they all worked. Yeah. So I was like, wow, yaar, it's about just being honest to your story and nothing else matters. So Parasite is a film that really inspires me as to Yeah. what cinema can do if done well. Yeah. Yeah. And just one question from my end because I'm quite intrigued with your mind. Like आप कैसे Yeah. फिल्म सिलेक्ट करते हो देखने के लिए? What are the factors? मतलब ट्रेलर देखते हो, एक्टर, डायरेक्टर, पास्ट वर्क, what in like Yeah, क्या recommendations? I'll tell you, and this is something I follow in my production also. Like, I like the back end work, I like marketing, I like. तो हम लोग जो भी फिल्म प्रोड्यूस करते हैं ना उसका पोस्टर शूट से पहले डिजाइन कर लेते हैं. पोस्टर एंड ट्रेलर का स्ट्रक्चरिंग आई डू इंडिविजुअली ऑन माई ओन बिफोर बेस्ड ऑन द स्क्रिप्ट. एंड एक्चुअली अब आप पूछ रहे हो तो ये अगेन मेरी जहन में आ रहा है.
I choose to watch a film based on a poster or a trailer. So Okay. if there's a poster, like I saw Anna's, I was scrolling. ऐसा नहीं है कि जब मैं फ्लाइट में चढ़ा मुझे आना देखनी थी. कुछ 80 फिल्में थी, राइट, मेरे Yeah. पास. एंड उसमें से मैंने आना पिक किस लिए किया, क्योंकि yes, subconsciously किसी ने एक्शन के बारे में बोला था, but the poster really stood out to me. One girl in the middle of that red and black background. There was something that excited me. Then I saw the trailer because I liked the poster. I saw the trailer, Yeah. and then I loved the trailer, so I saw the film. So mostly that is the way. If a poster or a trailer excites me, then. But there have also been recommendations. Like my wife recommends films which blow my mind, जिनके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं होता. जैसे विल स्मिथ की एक फिल्म थी जो वीनस विलियम्स एंड सेरेना विलियम्स के ऊपर थी. The father. Was किंग King किंग Charles, King Richard. किंग रिचर्ड. Yeah, yeah, सो yeah. ये काफी Was the पहले, father इससे of पहले the. कि yeah, it before it won the Oscar and all, when it had released in America, she told me about it, and I was like, acha. So then we were on a flight, and she said, you must watch this film because you'll like it. Because I'm a huge lover of Dangal. Yeah, Dangal is another film I love. So King Richard is something I saw out of the blue, without seeing the poster, without seeing the trailer, because somebody who knows my taste recommended it Yeah. and said you will love it. So I saw it. So it's a fact. These things. Otherwise, मैं सब कुछ हिंदी फिल्में मैं ज्यादातर देखने की कोशिश करता हूँ. Got it. So yeah, that's it. What's next for you right now? Like what's यार, upcoming? I was in New York training. I started training with Sahi again for Lakadbaggha 2, क्योंकि Lakadbaggha 2 का एक्शन थोड़ा और एक ऊपर. खतरनाक है. We are shooting it in Indonesia in December. So again, I started now in July so that I can. But I injured my wrist, so I'm just letting it heal. And then मेरी एक फिल्म है हरिओम, रघुवीर यादव और मैंने, जो मैंने लकड़बग्गा के बाद शूट की. पिछले साल मैंने एक ही फिल्म की, हरिओम, एज एन एक्टर. वो हमने शूटिंग फिनिश की है उसकी दिसंबर जनवरी. बनारस और भोपाल में सेट है, तो वो आएगी इस साल एंड में. और मैंने अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट की है पिछले साल हाँ. मार्च में. इसकी शूटिंग हुई यूके में, कॉल्ड लॉर्ड कर्जन की हवेली. सो अगले हफ्ते उसका वर्ल्ड प्रीमियर अनाउंस होगा. एंड देन इट्स ट्रैवलिंग टू 2-3 festivals and then release in December or Jan. Yeah. Great. I wish you all the best. Thank And you. yeah, everyone listening, Lakadbaggha dekho. I'll put some more. Like, Please put it on the story. It's free. It's on Z5. yeah. And it's trending on Z5, and it has done some insane numbers, I'm told, in the last 1 week since its Yeah. release. So please watch it and spread the word and adopt. Don't shop. Sure thing. Sure. Thanks. Thank you. As you are here for the first time, let me introduce you to Wall. Wall is a platform that will change how you interact with entertainment. It helps you in content discovery and assists you in finding where to watch your favorite content from the cinema. It is a social network for cinema enthusiasts, helping you build your cinema community and your personal cinema diary. Recommend movies, make collections, and follow your favorite individuals to get new suggestions. Wall attracts thousands of film critics, reviewers, and consumers, and it provides a smarter way to consume your content. Download Wall now with this link. The link is also shared in the description. And let us know your experience.